Hello, good morning, everyone. So today we are starting with the divisibility rule. I think it's a SPI lecture. So in SPI, it's a maths. It's going on a maths. In the maths, you have the portion till 10th. It's not the portion only of the 10th. It's a till 10th. So for that, you have to learn some basic concepts of class ninth as well, class 8th as well as class ninth, and as well as a class 10th, which are mandatory. So these three class you have to complete all the topics, some basic topics like divisibility rules, or cyclic numbers, or some squats and indices. So you have to know all this about the number system, which is basically known as the number system number system in which the topic is the main topic we are going to discuss today in the number system is divisibility rules. What is the divisibility rules? मतलब ये टॉपिक है क्या एक्चुअली? तो अपने पास जो नंबर्स है, वी हैव द नंबर्स लाइक 672, 991, 5672, ऐसे 991, 780, 365. सो ये जो ग्रेटर नंबर है या इससे आगे आने वाले नंबर थाउजेंड्स में होंगे, 10,000s में होंगे, तो ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है? जब अपन इसको फैक्टराइज करते हैं, हम हमें इसको फैक्टराइजेशन करना होता है, तो ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, ये हमें पता होना जरूरी होता है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखो बच्चों, एसपीआई में कैसा है, तुमको तुमको एमसीक्यू रहेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको एमसीक्यू नहीं था, टाइम लिमिट था, लेकिन आपको रिटर्न में था। टाइम लिमिट बड़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको एमसीक्यूज रहेगा, टाइम लिमिट कम रहेगा, एक क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। तो इस टाइम पीरियड में, in between this time period, you have to solve the question, you have to think on the question, and you have to solve the question. But if your calculation is weak, then it will take a more than 2 to 4 minutes for solving the same question. So the main concept is that you should increase your calculation firstly. You should be focusing on the calculation. So for the calculation, we have some basic rules, or we have some basic concepts of 9, 10, 8 that we are going to study now. Okay, so like this, for the divisibility of the number, we have for the numbers like 991, yeah, 78691, this kind of number, 4149, this kind of number. What is the divisibility test? By which number they are divisible? We will see it. This will be used in the chapters like quadratic equation, arithmetic progression, trigonometry as to. So in all the chapters, you will get the use of these numbers. Okay. So starting with the number two, the first number is 2. So we'll start with the number 2. See, if the last digit is even or 0, then the number is divisible by 2. That means if in any number, sorry, in any number, if the last, or you can say unit digit, do you know what is meant by unit digit? See, if you have the number 765, this 5 is your unit digit. This, the last number, is your unit digit. It's on unit place, unit digit, which is known as on unit place. Okay, so
if any number, any number, if the last or the unit digit is even or zero, is even or it's a zero, is zero, then then the number is divisible by 2. Then the number is divisible by. So this is the divisibility test of 2. What are the main things? The number should, the last digit, that means unit digit, should be even or should be zero. When the unit digit is even or zero, then the number is divisible by 2. So what is the even over here? Even, what do you mean by even? Even number. Even number are the numbers which are multiple of 2 or division of 2, and the standard form of even number is 2n, and standard form of odd number is 2n minus 1 or 2n plus 1. You get my point? Next, going on, we have the next number 3. So what is the divisibility test for 3? See, for the number 3, it's very simple. If the sum of the digits of the given number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. That means, see, if the sum of the given number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. See, what is the important point? Sum of the number. Sum should be divisible by 3. We'll take an example. For example, you have the number 9 6 30, yeah, 693. You have this number. See, if the sum of this number is divisible by 693, you have the number, and you should check whether the number is divisible by 3 or not. Then, how you can check? First, you should add the numbers. That means 6 plus 9 plus 3. You should check the sum of number. So, the sum of number is, what is the sum of number? 18. And which is the factor of 3? That means which is divisible by 3? 18. The sum of number is 18. Sum of number is 18, and this 18 is divisible by 3. Yes or no? And 18 is divisible by 3. So when 18 is divisible by 3, then the number itself will be divisible by 3. Therefore, the number, the given number, that means 693 is divisible by 3. By 3. You get my point, everyone? Hello? Yes, sir. Okay.
So note it down, please. Next one, for 4. We'll see now for 4. What is the divisibility rule for 4? It's for even numbers, the divisibility rules are quite easy as compared to the odd numbers. Okay. Now see for the 4. See, if the last two digits are divisible by 4, means in the given number, in the given number, in the given number, if the last, sorry, if the last two digits are divisible by 4, then the number itself is divisible by 4. Then the number itself is divisible by 4. For example, let's take an example. For example, you have the number 3264. Yeah, 3764. See, in this number, you should check the last two, last two digit, not the sum of last two digit. Don't be confused here. Or they are telling only last two digits. So whether this last two digit, that means 64 is the last two digit. So are this divisible by 4? Yeah, I think, yeah, it's they are the divisible by 4. So the last two digits is 64, and 64 is divisible by 4. Therefore, this all the number is also given number is also divisible by 4. Therefore, 3764 is divisible by 4. You got my point, boys? Hello, students? Yes, sir. Yes. Okay. So please note it down. Sir, note किया. Okay, next. Now coming for the 5. 5 is easier. In the given number, if the last digit is, when the last digit will be 5 or 0, then it's divisible by 5. In the given number, if the last digit, or you can say unit digit, is 5, 0 or 5, then the number is divisible by 5. The number is divisible by 5. You got my point?
तो यस सर। हाँ, when the last digit will be 0 or 5, then the number is divisible by 5. Next is 6. What is the case of 6? The case of 6 is quite dependent upon the previous cases as 2 and 3. See, if the given number, if the given number is divisible by 2 and 3, then then the number is divisible by 6. See, the given number should be divisible by both 2 and 3. Divisible by both 2 and 3. Then and then only the number will be divisible by 6. जो नंबर दिया होगा वो आपका जो नंबर है वो 2 से और 3 से, 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब ही वो 6 से डिवाइड होगा. Okay, next one is, see, for this 7, next is seventh one, but seventh is a prime number, and prime numbers have a special cases. 2 and 3 is also a prime number, but these are more used prime numbers as you have many multiples of 3 and 2, or factors of 3 and 2. So for 7, this is not the condition. Okay, so 7 is a prime factor. Sorry, 7 is a prime number, so for that they have some special cases. The prime numbers as, see, prime numbers as, I will, what are the prime numbers, I will write down here. What are the prime numbers? The numbers which are divisible by 1 and itself. Numbers which are divisible by 1 and itself. These are known as the prime numbers. Examples are 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, then 11, 13, 17, 19, 23, and so on. Okay, so these are the prime numbers. Coming next to the point, now next it's the divisibility rule for 8. Ah, सर, yes, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 नहीं है क्या? 7 बच्चा ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स अक्सर नहीं होते हैं या स्पेशल केस में होते हैं. समझेगा? ओहो। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल फिलहाल तो अपने को नहीं है. ओके सर, हो हेलो. कि सर? अभी देखो बच्चा, अपने पास ना एसपीआई के एग्जाम के लिए अपने पास कितना दिन बाकी है? 1 डेढ़ महीना. तो हमें वही चीज पढ़ना है जो हमें एग्जाम में हेल्प कर सके. पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ चीजें है, लेकिन वही चीज हम पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्जाम में फायदा हो, या जो टॉपिक एग्जाम में चल रहा है, आने वाला है,
जो कंसेप्ट एग्जाम में आता है, जो पोर्शन है वही पढ़ेंगे। ओके बेटा, ना कि सिर्फ मैथ्स के लिए, अदर ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसा ही है। हो यस सर, समझा मैं। ओके, नेक्स्ट इज 8। सी, what is it the case of it? In the given number, in the given number, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है ना, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। इन द गिवन नंबर, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स, if the last 3 digits digits are divisible by 8, then the number is divisible by 8. The number is divisible by 8। क्लियर है पॉइंट को, इसको 8 को? हाँ सर। ओके, नोट डाउन करते जाओ। हाँ, नाउ सर फॉर द 9। हो सर, यस, साथ में कर रहा हूँ। हाँ ओके। For the 9, see what is the concept for the 9? Same the concept as it was for the 3। अगर uh, उस नंबर्स के सम डिविजिबल हो 9 से, डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो। जैसे 3 को क्या था, अगर उनका सम 3 से डिविजिबल हो तो नंबर 3 से होगा, वैसे ही उनका सम 9 से हो तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ओके, इफ द सम ऑफ इन द गिवन, if the sum of the digits is divisible of the digits is divisible by 9, 9, then the number is divisible by 9। by 9। ओके, अगर इनका जो ये है सम है, इस नंबर्स का जो भी नंबर्स आपको दिया है, वो अगर 9 से डिविजिबल है तो ही आपका जो पूरा डिजिट है वो 9 से डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट फॉर द 10। 10 के लिए बहुत आसान है, यूनिट प्लेस में 0 हो तो डिविजिबल है। In the given number, if the unit place is 0, then the number is divisible by 10। बहुत आसान है। In the given number, if the unit place is 0, then the number is divisible by, the number is divisible by 10। You got my point, beta? So these are the main numbers whose divisibility test you need for solving the SPI questions or solving the SPI paper. So these are the 9 numbers starting from 2 to 10, not 9, 8 numbers, as 7 is not considered. Okay, so we will check from one once again. What was the divisibility rules for 2? The unit digit should be even or 0, then the number is divisible by 2. Okay, first of all, clear. What are the terms for even number? These are the terms for even and odd number. Okay, then even is equal to, even is in the form of 2n,
Odd is in the form of 2n minus 1 or 2n plus 1. Okay, then coming to the next number 3. If the sum of what is the concept in 3? If sum of all digits of the given number is divisible by 3, then your number is divisible by 3. Okay, the next, for 4, what was for the 4? If the last two digits are divisible by 4, then the number is divisible by 4. Simple. Then for a 5, unit digit must be 0 or 5, then your number is divisible by 5. Now for the 6, if your given number is divisible by both 2 and 3, not only by 2 or only by 3, both 2 and 3, okay, then your number will be divisible by 6. For example, see, you have the number 12. Yeah, you have the number 9. You have the number 9. I will give you an example in sixth. You have the number 9, and which is divisible by 3. And you have the number 8, which is divisible by 2. So these two numbers are not divisible by 6. They are not divisible by 6. Then you have the number like 24. See, 24 is both divisible by 3 and 2. Both divisible by 2 and 3. So this is the number which is divisible by 6. You got my point? Yes, sir. Okay. Now next we have seen prime numbers. What are prime numbers? Which are divisible by 1 and itself are known as the prime numbers. Then next we have from 6 we have came to the 8. What is a divisibility test? See, if the given number, the last three digits are divisible by 8, then the number is divisible by 8. And for the 9, 9 is same as third one. The sum should be divisible by 9. When your sum is divisible by 9, then the number is divisible by 9. Okay, you got my point? It doesn't matter which number is at a unit place. Only it matters that when your sum is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. Okay, the next. For the 10, it's very easy. In the unit place or at the unit place, the term should be 0. 0 should be on the unit place. Then the given number is divisible by 10. Okay, so I think the points still here a- are clear. Yes or no? Yes, sir. I'm sorry. So next point we are starting with is Scots and indices. सर इसके आगे नहीं देखने डिविजिबिलिटी रूल्स. नहीं, सिर्फ 10 तक काफी है बेटा, लेकिन ओके इसको प्रैक्टिस करना है, इसको याद रखना है. हेलो. हो गया सर. बिल्कुल सर. जी बेटा, ऑफलाइन में नहीं आते, सीबीएसई से हो ना? स्टेट बोर्ड है सर. स्टेट बोर्ड एग्जाम्स चल रहे क्या? हम्म. अच्छा, और कितने दिन एग्जाम्स है? सर 3 पेपर रहे 26 तारीख को. ओके ओके, पेपर से होते ही आ जाओ बेटा. ओके सर. The next is Scots and indices. सर Yes, ऑनलाइन और ऑफलाइन की स्टडी में कोई डिफरेंस रहता है क्या? थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जो टॉपिक ऑफलाइन में कवर किया है ना, वही हम ऑनलाइन में कवर कर रहे हैं, ताकि जो तुम्हारे जैसे और कई बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड में है. ओके. हम्म.
लेकिन वो आ नहीं सकते। आप रात का 7:40 से 9:40 वाला लेक्चर अटेंड करते हो क्या? हो, यस सर, हो जरूर करता हूँ। ओके, आपका नाम क्या बेटा? वैष्णव। हाँ, करते हो शायद, आप देखा मैंने आपको 2 दिन। ओके, sorts एंड indices। व्हाट इज द टर्म sorts एंड indices? देखो, ये जो आप देखते हो ना, रूट वाली चीज, ये इसको ही sorts बोलते हैं। ओके, ओके बेटा। तो इसको तुम लिखते कैसे हो? देखो, sorts को लिखते कैसे हो तुम? पहला पॉइंट लो, sorts। sorts जो होते हैं ना, वो रूट वाले चीजें होते हैं, जैसे √8 या √6। फिर इसको √6 का क्या लिख सकते हो तुम? 6 की पावर 1/2, यही ना? हाँ सर, हाँ। हाँ, देन यू हैव √8 or √8, what you write for the √8? You break in two forms. Okay, then suppose you have cube root of 8. So what you will write for the cube root of 8? 8 power 1/3. Okay, हाँ okay. सर। These are the sorts. Now see, pure sorts. There are two types of sorts, three types. Pure sorts. Pure sorts means which are not divisible by anything. See, that means if you have the number √8, √8 का फाइनल आंसर √8 है क्या बेटा? इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन? कर सकते हैं सर, कैसे? अंडर रूट टू फोर इन। इंटू फोर। सो √4 × √2 क्या होगा ये? 2√2। हाँ कि ना? हाँ सर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन √8 को? √8 इज इक्वल टू 2√2, ऐसे लिख सकते हैं ना √8 को। नाउ हाँ सर, लिख सकते हैं सर। देखो, तो इसको क्या बोलेंगे मालूम क्या? मिक्स्ड मिक्स्ड सॉर्ट्स बोलेंगे इसको। मिक्स सॉर्ट्स, ओके। समझे क्या? ये जो मिक्स्ड में है ना, टू, एक एक ये जो है ना, ये टू रैशनल है, और ये √2 क्या है? इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल जब मल्टीप्लिकेशन में आता है उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सॉर्ट्स। और जब सिर्फ इरेशनल आता है, सिर्फ इरेशनल आता है, जैसे कि ये वाला, √2, √7, √11, इसको क्या बोलेंगे अपन? या √15, जो ब्रेक नहीं होते किसी रूट फॉर्म में, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलते हैं प्योर सॉर्ट्स। प्योर सॉर्ट्स। बिकॉज दिस नंबर्स आर नॉट ब्रेकेबल, या ये सिर्फ और सिर्फ इरेशनल है। क्या है ये नंबर्स? सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर्स है। ये जो नंबर्स है ना, हम्म। सिर्फ और सिर्फ इरेशनल कहलाए जाएंगे। समझा सर। ना, जो नंबर्स आपके ब्रेक फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 4 + √3, 2 - √5, ये ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, इनको अपन कंपाउंड सॉर्ट्स बुलाते हैं। समझे सर? हाँ सर, समझा समझा। हाँ सर। ओके, इसके आगे का जो है नेक्स्ट, सॉर्ट्स के कुछ रूल्स है, मैं आपको बताता हूँ। उतने रूल्स आज अपन स्टडी करेंगे।
रूल्स ऑफ सॉर्ट्स। देखो रूल्स ऑफ सॉर्ट्स में पहला आता है आपका रूट ए का स्क्वायर। रूट ए क्या होता है सर? ए की पावर 1/2। टू। दूसरा रूट ए का होल ब्रैकेट स्क्वायर को ही रूट ए का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और इसी को रूट ए भी बोल सकते हैं, जो होता है ए के बराबर। सही है कि नहीं? हाँ रूट सर। कटता है। आ हो सर। नेक्स्ट, इसको देखो, ऐसे नहीं, उल्टा भी सोचना है कभी कभी। ओके, सिर्फ सीधा नहीं सोचना, उल्टा भी सोचना है। जैसे कि 3 को अपन कैसे लिखेंगे फिर? रूट 3 समझे बात को? हम्म। ये भी क्वेश्चंस में सोचना है। नेक्स्ट देखो, रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ ए ए बी। इंटू बी। ओके, देन रूट ए डिवाइड बाई रूट बी आपका अंडर रूट में ए बाई बी हो जाता है। सेकेंड, नेक्स्ट इसमें आएगा एक ले, लेकिन रूट ए प्लस रूट बी आपका ऐसे नहीं होता है, समझे क्या बात को सर जी? हाँ। हो सर। नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस बी, नॉट इक्वल है आप, नॉट इक्वल है, समझे बात को? हाँ सर। फिर तीसरा, लेकिन अगर रूट माइनस भी नॉट इक्वल है, माइनस भी नहीं चलता है आप। ओके, हाँ सर। रूट ए प्लस रूट ए हो तो ये क्या होगा? 2 रूट ए। ओके, हाँ सर। नाउ अगर ऐसा हो एम रूट ए प्लस एन रूट ए, तो यहाँ पे होगा कैसे? रूट में कॉमन चीज होनी चाहिए, कैसे? एम प्लस एन इंटू रूट ए। ओके, हाँ सर। नाउ सर बोर्ड दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? सर दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। ओके, तो ये चीजें है। नेक्स्ट, और एक चीज क्या आएंगी आपकी रूट में? प्लस माइनस नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ, तो इतनी जो चीजें हैं ना रूट में, वो जरूरी है। क्लियर है सर। बात को? जी। हाँ सर। सर यम रूट ए इंटू एन रूट ए ऐसा होगा तो यम इंटू एन रूट ए होगा ना। एम रूट ए इंटू एन रूट ए। रूट ए, तो यहाँ पे क्या होगा मालूम क्या? हाँ। रूट ए इंटू रूट ए तो ए बन जाएगा, और हम्म। अंदर एम इंटू एन बनेगा, समझे? हाँ। ऐसे होगा। ओके, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है अब। इतना लिख के लो सर जी, और यहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। सर अगला कौन सा क्लास है? अगला तो मेरे को नहीं मालूम, शायद यहाँ पे आई थिंक इतना ही है। बाद में सर। आपको जो मैम है वो गाइड करेंगे अगला कौन सा क्लास। ओके ओके सर, सर। जी। इधर हमने यम रूट ए लिखा है, उसकी जगह बी लिखते तो कहाँ पे सर? ये लास्ट वाले में। सर फिर नहीं होता कुछ, फिर रूट में ए इंटू बी होता, हाँ। ऐसे ना। सर एम उसकी रूट पावर ए तो यम इंटू एन होता ना। रूट बी, ऐसा ना। तो ये हाँ हाँ ए ऐसा। इंटू बी रूट में, और बाहर एम इंटू एन होता रे बच्चा, समझा? हाँ सर, सर उसकी पावर होती ना यम इंटू एन। हाँ। हाँ ओके समझा सर। हाँ सर बिल्कुल। हो गया ओके सर। थैंक यू ओके सर। ओके, तो मिलते हैं फिर बाद में अगले लेक्चर में। ओके। ओके। ओके सर।